Hey guys, this is Sahil and welcome to yet another episode of Weekly Mastermind. Weekly Mastermind में आप सभी का स्वागत है and this is last second Weekly Mastermind of this amazing year of 2025. Overall इस साल में हमने काफी सारी मूवमेंट देखी either on the upside or on the downside and including consolidation trend as well in a lot of sectors. तो बहुत ही अमेजिंग ईयर रहा बट इवेंचुअली हो सकता है दैट नेक्स्ट ईयर द थिंग्स वुड गेट बेटर एंड वी वुड सी all-time high zone and all the major sectors, major indices outperforming and forming new all-time high zones and so on. So आज का एपिसोड जो रहेगा काफी इंपॉर्टेंट रहेगा with respect to overall market perspective so that we can understand that what all we saw in last 1 week and what all we can expect in 1 week down the line so that हम लोग ओवरऑल एनालिसिस के थ्रू हम लोग जान पाएंगे दैट व्हाट आर द सेक्टर्स व्हिच आर आउट परफॉर्मिंग, व्हाट आर द सेक्टर्स व्हिच आर अंडर परफॉर्मिंग, और बेस्ड ऑन दैट हमें कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करना है, कौन से सेक्टर्स के स्टॉक में ट्रेड करना है, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर वीकली मास्टरमाइंड. एंड इस एपिसोड में हम लोग ओवरऑल मार्केट का टॉप डाउन अप्रोच करेंगे वेयर वी विल एनालाइज 3 टाइम फ्रेम्स, दैट इज मंथली, वीकली एंड डेली, where monthly depicts long term trend, weekly depicts medium term trend and daily depicts short term trend from swing trading perspective. और हम लोग 7 स्टेप एनालिसिस में से 4 चीजों का यूज करेंगे, दैट इज प्राइस, पैटर्न, मोमेंटम एंड आरएसआई, जिसमें से प्राइस एंड पैटर्न ये दोनों चीजें कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बेसिस पे हम लोग डिटरमाइन करेंगे एंड मोमेंटम जो है हम लोग आरएसआई के बेसिस पे डिटरमाइन करेंगे. और वोलेटिलिटी हम बॉलिंजर बैंड्स का जो टूल है, बॉलिंजर बैंड्स नाम का टूल, उसके थ्रू हम डिटरमाइन करेंगे दैट वोलेटिलिटी हाई है या ओकेश है एंड सो ऑन. So without further ado, let's have a look at weekly mastermind for this week, that is for 21st of December 2025. And once again, I welcome you all to this amazing episode of weekly mastermind, जहाँ पे हमारा एजेंडा रहेगा. सबसे पहले हम मार्केट इंडेक्स देखेंगे, देन वील हैव अ लुक एट आउट परफॉर्मिंग एंड अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स. तो मार्केट इंडेक्स देखा जाए तो निफ्टी डाउन बाय 0.30, सेंसेक्स डाउन बाय 0.39, बैंक निफ्टी डाउन बाय 0.54, मिड कैप डाउन बाय 0.05, इंडिया विक्स डाउन बाय 5.83 which is good, and USD INR down by 1.09% which is again a great for Indian markets. तो निफ्टी 50 का चार्ट देखें तो मंथली अबाउट 60, वीकली एट मेक और साइडवेज सिचुएशन, और यहाँ पे जो है एक बुलिश इंडेसिसिव कैंडल भी फॉर्म हुई है. दिस इज व्हाट वी कॉल एज लाइक बुलिश हैमर. तो अगर इसको अगले हफ्ते बुलिश कंफर्मेशन मिलता है तो इवेंचुअली कैंडलस्टिक पैटर्न को भी कंफर्मेशन मिलेगा, प्लस आरएसआई 60 के जो है उस रीजन पे वो सपोर्ट ले लेगा, विच मींस इट विल मेंशन आई एम वेरी बुलिश. एंड देन जो डेली टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन है, इट कुड इवेंचुअली टर्न इनटू एन अप ट्रेंड एज वेल. सो दैट्स व्हाट वी हैव टू वेट फॉर. तो यहाँ पे एज ऑफ नाउ शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है दैट इज डेली टाइम फ्रेम, बेस्ड ऑन दैट वो कंसोलिडेशन में है, अदरवाइज ओवरऑल इट्स स्टिल बुलिश. Then we have Nifty Bank, monthly above 60, weekly above 60, and daily between 40-60. So we have to wait for a proper breakout on Bank Nifty and specifically banking sector as well. And then we have private banks, monthly above 60, weekly again around 59-60, daily between 40-60. So we have to wait for further breakout on the positive side. So that अगर वो breakout दे देता है तो वो weekly time frame में bullish candle बनाएगा, and then it will mention I'm very bullish, and then from being strong to it will become very strong. Then we have PSU banks, monthly above 60, weekly also above 60, and daily between 40-60. For the short term trend, like for a smaller period of time, it's in a consolidation trend. Otherwise, once it breaks out तो वो फिर से uptrend में चला जाएगा, and then PSU banks will again become one of the best performing sectors, or we can call as outperforming sectors as well. Then we have sector specific. देखा जाए तो 3 sectors were on the positive side, except that सारे sectors negative में थे. IT was up by 1.08, followed by FMCG up by 0.53, infra up by 0.05. Except that सबसे ज्यादा bearish sector था media, down by 1.09, followed by energy down by 0.69, and then we have auto down by 0.58 and so on. तो sector specific के charts देखें तो निफ्टी IT मंथली बिटवीन 40-60, वीकली अराउंड 59-60 एंड डेली अबव 60. तो यहाँ पे जो है लाइक कॉन्ट्रा ट्रेंड चल रहा है शॉर्ट टर्म ट्रेंड में, लाइक शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में, बिकॉज डेली इज आउट परफॉर्मिंग वेर एज मंथली एंड वीकली आर स्टिल इन अ कंसोलिडेशन ट्रेंड. तो हो सकता है बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस विच वी आर एबल टू सी ऑन डेली चार्ट, तो बिकॉज ऑफ दैट वीकली टाइम फ्रेम में भी ब्रेकआउट आ सकता है, एंड देन इट विल इवेंचुअली पुल द मंथली चार्ट एज वेल, एंड देन आईटी कुड बी द
नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर एज वेल. बट ओवरऑल देखा जाए तो सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए, बट ओवरऑल it's still in a consolidation trend. Then we have auto, monthly, weekly above 60, daily between 40, 60. Again, we have to wait for proper breakouts on this sector so that we can keep it on the best performing sectors, outperforming sectors की list. Then we have metal, monthly above 60, weekly above 60, daily somewhere between 55 to 60 की range में चल रहा है पिछले एक हफ्ते से. So we have to wait for proper breakouts on this sector. Then we have FMCG, all three time frames between 40, 60. As of now, we can just avoid it. And यहाँ पे proper 40 के नीचे sustain करने के बाद now it has taken 40 support, which means it is mentioning that I am not so bearish, and this is what we call as bullish range shift as well. So हो सकता है that यहाँ से major bottom बन के FMCG like performance दिखाए हमें positive side में. Then we have energy, monthly, weekly, daily, all three time frames between 40, 60. Again, इसको avoid करेंगे. Then we have pharma, monthly above 60, weekly and daily in a consolidation zone. So we'll avoid this until and unless it is not breaking out properly on daily chart as well as weekly chart, because weekly maybe, as you can see, since almost 10 to 11 months, it's in a consolidation trend. ना वो 60 को तोड़ रहा है, ना वो 40 को तोड़ रहा है, either on the upside or on the downside. Then we have infra, monthly above 60, weekly around 60. Since last 2 weeks, वो RSI 59, 60 के आसपास ही घूम रहा है, and daily also between 40, 60. So we'll have to wait for breakout on this sector, RSI 60 का breakout, because long term and medium term are bullish. Then we have realty, monthly, weekly, daily, all three time frames between 40, 60. As of now, we can just avoid this sector. Then we have media, all three time frames below 40. This is one of the underperforming sectors, तो इसको बिल्कुल avoid करेंगे. Right, so I hope that you're absolutely clear with this analysis, and I also hope that based on the way I did the analysis, आप उसी same तरीके से like आपको अच्छे से समझ में आएगा सबसे पहले that what are the sectors which are outperforming and what are the sectors which we have to keep on our tracking list, जो कि breakout के वर्ज पे है. either on daily chart हमें wait करना है, और ऑन वीकली एंड मंथली चार्ट, जैसे कि आईटी सेक्टर का है, हमें डेली आउट परफॉर्म कर रहा है, बट वीकली एंड मंथली में वेट करना है फॉर प्रॉपर 60 ब्रेकआउट एंड सो ऑन. एंड जो भी सेक्टर्स अभी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, ऑल यू हैव टू डू इज गो इनटू द स्टॉक स्पेसिफिक ऑफ दोज सेक्टर्स. और जिस तरीके से मैंने मंथली, वीकली, डेली एनालिसिस किया है, उसी सेम तरीके से आप स्टॉक स्पेसिफिक का एनालिसिस करो, so that you can create your own buying and selling list, and eventually you can trade in the market and make money out of it. And I also hope that you are clear with this as well. And thank you so much for watching this episode till the end. I'll see you in the next one. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.